So good morning students. So in the last class I have completed most of the part of the theories, but some theories still left, so that I'll discuss when the question, according to the questions I'll discuss that theories. Okay, so now let me start some questions. So I'll go for questions today. So if we start by question number 1, to question number 1, so I'll give you that photo of the first page, because questions of the first page नहीं पूरा कर दे देंगे. So अभी just let me start the questions. So first question is given that, so there is a polygon having 44 diagonals. So you have to find out the number of sides. So given, what is given? The given is number of diagonals as 44. So we have to find out the number of sides of the polygon. तो ये तो बहुत simple question है, because you know that if we take the number of sides as n, let n be the number of sides, then you know the formula for number of diagonals. क्या था? So I gave you this n into n minus 3 by 2. इसलिए NC2 माइनस n होता है, तो उसको कैलकुलेशन करेगा तो फाइनली ये मिलता है. तो ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो देयरफॉर n into n minus 3 by 2 is equal to 44, because 44 diagonals given there. So therefore n into n minus 3 equal to 88. अभी देखो n तो एक नेचुरल नंबर्स होगा ही, होना ही पड़ेगा, और ये हम लोग उधर कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि you just try to write them as a product of two numbers provided the difference is 3. क्योंकि इसमें देखो n and n minus 3 दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. ये हमें देखो this is what the product of two numbers where the difference is 3, n into n minus 3. n minus 3 n से 3 times 3 स्मॉलर है ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों नंबर्स क्या है, डिफरेंस 3 है. So they are in product. So if you can write the right hand side as a product of two numbers where the difference is 3, then the corresponding must be equal. But n must be equal to 11 and n minus 3 must be equal to 8. तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट फर्दर कैलकुलेशन. तो यहाँ से हमको n का वैल्यू डायरेक्ट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा. सो ये पॉलीगन हैविंग 11 साइड्स. ओके ओके, सो go for the text. So next question number 2. So you have given that there are 4 letter boxes in a post office. In how many ways can a man post 8 distinct letters? देखो, so in a post office there are 4 letter boxes. Say these are the letter boxes. This is number 1, number 2, number 3, number 4. ठीक है. सपोज मान लो ये लेटर बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट ए मैन कैन पोस्ट, हाउ मेनी वेज ए मैन कैन पोस्ट 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स. तो हाउ मेनी वेज ए मैन कैन पोस्ट 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस. देखो इसमें ऐसा है कि फर्स्ट थिंग यू नो दैट पोस्ट ऑफिस में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि एक लेटर को एक ही में डालना होगा. मतलब देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 लेटर इन ए बॉक्स, ऐसा तो कोई रूल नहीं है. तो तुम हो सके तो इफ़ यू वांट यू कैन पुट ऑल द लेटर्स इन वन बॉक्स और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इन एनी ऑर्डर, इज इट. तो इसीलिए हम लोग को जब ये लेटर्स को पुट करना है तो हमको देखना होगा कि एक लेटर का जो प्रोसेस होगा वही लेटर सभी लेटर्स के लिए होगा. सो यू टू स्टार्ट 1 by 1. तो पहले हम देखना है कि एक लेटर हम हाउ मेनी मिनट्स यू कैन पोस्ट. सो जैसे कि इफ़ यू सी वन लेटर ना, 1 letter
one letter you can post, one letter can be posted in how many ways? 4 ways है कि नहीं, क्योंकि 4 बॉक्स है, कोई किसी में भी डाल सकते हो, यू कैन पुट एनीवेयर इन दैट 4। तो ऐसे हर लेटर्स का 4 वेज होगा ना, तो हर लेटर्स का 4 वेज होगा, तो टोटल वेज कितना होगा, यू हैव टू गो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इफ यू पुट द फर्स्ट लेटर इन 4 वेज, देन यू कैन पुट द सेकेंड इन 4, थर्ड इन 4, तो एवरी 8 लेटर्स यू कैन पोस्ट इन 4 वेज एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, क्योंकि इसमें टोटल हमको निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दैट विल गिव यू द टोटल वेज ऑफ पोस्टिंग 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स हियर। एक्चुअली फॉर्मूला से जा सकते हैं, बट फॉर्मूला से ये हो सकता है गलती हो जाए, बट यू बेटर यू गो बाय दिस प्रोसेस एंड दैट विल बी गुड। ओके, सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ calculation. You have given that n minus 1 C3 plus n minus 1 C4 greater than n C3. Then what is the value of n? n का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। देखो, you know that there is a formula, I gave you this formula, NCR plus NCR minus 1 इक्वल टू क्या था, n प्लस 1 CR। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन यू अप्लाई दिस इन लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये हमें n का मतलब n माइनस 1 है, और r मतलब जो ग्रेटर है 4 होगा, और r माइनस 1 3 होगा। तो r से मतलब होगा r क्या है और n क्या है, तो इसमें r हो गया, जो ग्रेटर होगा वही r होगा, तो 4 इज r एंड दिस इज n। तो जो भी होता है इस पर n होगा तो n प्लस 1 आ जाता है, इसका मतलब यू हैव टू ऐड 1 देयर। सो इफ यू अप्लाई इन लेफ्ट हैंड साइड, तो यू हैव टू राइट n माइनस 1 है, तो प्लस 1 आएगा, देन CR, r इज व्हाट 4, इट इज NC3। सो फाइनली यू हैव गॉट, ये n हो गया NC4, एंड इफ यू टेक इट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट द फॉर्म लाइक दिस। अभी हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, जो तुम लोगों को मिला है कि NCK बाय NCK माइनस 1 क्या था, n माइनस k प्लस 1 बाय k। ये भी दूसरा फॉर्मूला है जो तुम लोगों को पहले ही मिला था, तो उसको ही हमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली ये फॉर्म में है। जब हमें k होगा 4, तो अप्लाइंग कंसिडरिंग k as 4 यू गेट व्हाट, n माइनस 4 प्लस 1 by 4 greater than 1. So now it's a very simple calculation. So if you go in the next page, so it will be what, n minus 3, and if you take it to the right hand side, you will get 4. So n greater than 7. So finally you have got n greater than 7. So value of n can be what? If you go in the options, you can see only one value which is greater than 7 is 8. So correct value of n must be 8 in this case. So this is given in option D. Okay, so after that the next question, ये लंबा क्वेश्चन है, तो हम उसको आज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सिंपल तरीका क्वेश्चन में जा रहे हैं। यू हैव गिवन ए वर्ड, द वर्ड इज गिवन एज मोनालाइज। मोनालाइज ही होगा, तो मोनालाइज या मोनालिसे भी बोल सकते हो। सो दिस इज द वर्ड गिवन। नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स इन द alphabets, the word given this word, so that vowels always occur together। तो हम कितना वर्ड्स बना सकते हैं यहाँ का जो लेटर्स है यूजिंग देम, सो दैट vowels always occur together। तो पहले हम देखते हैं हमें vowels कितना है और कॉन्सोनेंट्स कितना है।
So there are what? There are क्या है? A है, O है, I है, E भी है ना, तो इसका मतलब there are 4 vowels और बाकी है M, N, L, S ना, टोटल 8 लेटर्स है, तो 8 लेटर्स से 4 vowels है। तो इसमें हमको बोला कि ये जो 4 vowels है दे मस्ट ओकर टुगेदर। तो ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज ए मेथड दैट आई टोल्ड यू दैट आई हैव टू डिस्कस दिस मेथड। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है। जब भी कोई आइटम एक साथ होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग से बांध देंगे। जैसे कि मान लो इसको हम बांध दिया स्ट्रिंग से, उसके बाद बाकी का साथ जो बैलेंस करेंगे, देखो ये डिटेल्स में देखो, तो देखो इसको हम लोग को एक साथ रखना है ना, इसको जब एक साथ रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे, पूरा को लेटर उसको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे। उसके बाद बाकी का साथ हम उसको अरेंज करेंगे। देन एवरी अरेंजमेंट क्या होगा, दे विल बी टुगेदर। लेकिन जब हम इसको टुगेदर होगा तो एक बात है कि यहाँ में हम लोग सभी लेटर्स को एक साथ ले लेंगे, है कि नहीं। तो हम सिर्फ उसको सिंगल में लेना होगा, ठीक है। तो इसको एक सिंगल लेटर मानना होगा क्योंकि हम इसको बांध दिया है। So when you consider them as a single, now you have what? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 letters you have. So when you have 5 letters, so therefore 5 letters can be arranged as what? So हम डायरेक्टली लिखेंगे to tell words ना। तो इसमें 5 letters हम अरेंज कर सकते हैं। इसको एक लेटर मानना होगा क्योंकि पूरा बांध दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5. 5 can be arranged by 5 factorial. बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसको हम एक ही अरेंजमेंट में रखेंगे। यू कैन अरेंज देम अमोंग देम, क्योंकि हम इन बिटवीन अरेंज कर सकते हैं, तब भी वो एक साथ ही रहेगा। सो देयरफॉर व्हेन यू अरेंज देम टुगेदर इन बिटवीन, सब इसको हम एक साथ अरेंज करेंगे इन बिटवीन देम, कितना अरेंज कर सकते हैं। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज बाय 4 फैक्टोरियल। ओके, सो देयर विल बी 4 फैक्टोरियल। तो दैट इज द केस व्हेन द vowels are together। तो यही है आंसर, बट आंसर now it is not given in this form, so I think it is given in different form, क्योंकि we can write 5 factorial is what, 5 into 4 factorial into 4 factorial, so you can write it as 5 into 4 factorial square. So that is your answer. Option A is correct. So next question. So question number next go for 7. तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो you have given some digits from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are digits given. Now question is, how many numbers can be formed between 5,000 and 10,000? You have to form the number between them so that repetition not allowed. So repetition not allowed. तो कितना numbers बनेगा? So first thing is what? If the words that numbers are between 5,000 and 10,000, then they must be a number of 4 digits. तो 4 digit numbers होगा, and then the first digit it never be less than 5, because to make it greater than 5,000 you have to take a number at least 5 or more than that. So you can take any numbers from 5, 6, 7, 8, 9. Okay, then the next number you can take any one among them, but it must be a number less than this, because already you have put one number here, so एक कम हो जाएगा। तो टोटल 8 नंबर में से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो that can be done by 8 ways, and then be by 7 ways, and then can be by 6 ways.
बट ये हम ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं. These three places, if you put arrange together, these three places can be filled up. Three places are there, and now you have left 8 digits. So by using 8 digits, you can arrange 3 places by 8p3 ways. So this is also another way you can go for it without going by this. So therefore, now if you go like that, total कितना होगा? First by 5 ways and others by 8p3. So 5 into 8p3 is the direct answer. So that is given in option A. So after that, you have given there are 5 boys and 3 girls in a row. So how many ways you can arrange so that girl is in between 2 boys? So there are 5 boys and 3 girls in a row. तो हमको इसको अरेंज करना है so that girls are in between boys. तो ऐसा केस में हम लोग क्या करना है, पहले हम बॉयज़ को अरेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ मेनी पोजिशंस यू विल गेट फॉर गर्ल्स. सो इफ़ यू अरेंज द बॉयज़ फर्स्ट, से इसको हम थोड़ा कलर से लिख देते हैं. सो इफ़ यू अरेंज द बॉयज़ फर्स्ट, सपोज दीज आर द, थोड़ा सा छोटा करना है. सपोज ये हो गया, दूसरा और एक ले लिया, 2, ऐसे लिखने से थोड़ा क्लियर होगा. 3, 4, 5 ना. सपोज मान लो ये बॉयज़ है, तो बॉयज़ को हम लोग यहाँ पे फिलअप किया, तो दे आर द बॉयज़. सो बॉय विल बी हियर, boys, 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 boys. So 5 boys for 5 places. So boys can be arranged by, इसको हम बाद में लिखेंगे. पहले देखते हैं कि हाउ मेनी प्लेसेस फॉर गर्ल्स आर देयर नाउ. तो गर्ल्स के लिए कितना प्लेस रह गया? तो गर्ल्स के लिए रह गया ये, these are the places for, if you take another color, so these are places for girls. So girls 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the places for girls. So first thing, now you see how many total will be there. So total boys can be arranged by 5 factorial. तो गर्ल्स के लिए कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 प्लेस है एंड 3 गर्ल्स है. तो इफ़ यू गो लाइक डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट, तो फर्स्ट गर्ल बाय 6 वेज, सेकेंड बाय 5 वेज, थर्ड बाय 4 वेज, और यू कैन राइट 6p3 ऑल्सो. तो इफ़ यू कैलकुलेट देम, तो देयर इज 120, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120. तो यहाँ में कितना है? यहाँ में भी 120 हो रहा है. So 144, so 14400. So that is the total number of ways you can arrange them. Okay. Sorry. So here, so something wrong I have done. So actually, these 2 places should not be here, because girl must be in between the boys, it is given. So only 4 places left for girls. Therefore, what to do? That 4 place means you have to take only the places, not the whole 4 places. So therefore the places can be filled up by 4 ways, 3 ways and 2 ways. So it is 24, I think. So there will be 24. So now if you take their product, you will have how much?
2880. So this is the answer. Option A is correct here. So that's all for today.